8 uses of claim. Number 1, claim दावा करना. मैं दावा करता हूँ कि ये ज़मीन मेरी है. सब्जेक्ट claim और S object. I claim this land is mine. नोट कि इंग्लिश दैट लगाएं या ना लगाएं, लेकिन इंग्लिश नेटिव राइटर दैट नहीं लगाते. वो दावा करता है कि ये किताब उसकी है. He claims this book is his. Number 2, claim to, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. दावा करता है या दावा है. नईम का दावा है कि वो इम्तिहान में आला नंबर हासिल करता है, या इस तरह भी सेंटेंस कह सकते हैं, नईम का दावा है कि वो इम्तिहान में आला नंबर हासिल करेगा. नईम क्लेम्स टू गेट हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. नईम claims to get high marks in the examination. आफ्ताब का दावा है कि उसे पहला इनाम मिलेगा. आफ्ताब claims that he will get the first prize. नोट, जब फिक्रा that से जुड़ेगा तो इसमें will और shall आता है. जब फिक्रा that से जुड़ेगा इसमें will और shall आता है. आप पिछले सेंटेंस को गौर से देखें, उसमें हमने विल और शेल नहीं लगाए, हालांकि गा आखिर में आया है. नंबर 3, क्लेम टू बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. दावा है कि कर रहा है. क्लेम टू बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. दावा है कि कर रहा है. हमारा दावा है कि हम तरक्की कर रहे हैं. सब्जेक्ट क्लेम टू बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. ऑब्जेक्ट वी क्लेम टू बी प्रोग्रेसिंग. आफ्ताब का दावा है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है. आफ्ताब क्लेम्स टू बी सर्विंग हिज पेरेंट्स. आफ्ताब क्लेम्स टू बी सर्विंग हिज पेरेंट्स. इमरान का दावा है कि वो अपनी मुश्किलात पर काबू पा रहा है. इमरान क्लेम्स टू बी ओवरकमिंग हिज डिफ़िकल्टीज. इमरान क्लेम्स टू बी ओवरकमिंग हिज डिफ़िकल्टीज. नंबर 4, क्लेम टू बी एडजेक्टिव. इसमें सिफ्त आ जाए तो दावा है कि खुद है. दावा है कि खुद है. इमरान का दावा है कि वो फिक्रमंद है. सब्जेक्ट क्लेम टू बी एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त. इमरान क्लेम्स टू बी वरिड. बासत का दावा है कि वो इंतहाई चौकस नौजवान है. बासत क्लेम्स टू बी वेरी एक्टिव यंग मैन. बासत का दावा है कि वो इंतहाई चौकस नौजवान है. बासत क्लेम्स टू बी वेरी एक्टिव यंग मैन. आफ्ताब का दावा है कि वो एक ईमानदार आदमी है. आफ्ताब क्लेम्स टू बी एन ऑनेस्ट मैन. आफ्ताब क्लेम्स टू बी एन ऑनेस्ट मैन. नईम का दावा है कि वो एक जिम्मेदार नौजवान है. नईम क्लेम्स टू बी अ रिस्पॉन्सिबल यंग मैन. नंबर 5, क्लेम टू बी बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस सेंटेंस है. दावा है कि किया जा रहा है. नंबर 5, क्लेम टू बी बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस सेंटेंस है. दावा है कि किया जा रहा है. दावा है कि किया जा रहा है. असलम का दावा है कि उसे बदनाम किया जा रहा है. सब्जेक्ट क्लेम टू बी बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म. असलम क्लेम्स टू बी बीइंग डिफेम्ड. नईम का दावा है कि वो बदनाम हो रहा है. नईम क्लेम्स टू बी बीइंग डिफेम्ड. सईद का दावा है कि उसे उसके किसी कसूर के बगैर जुर्माना किया जा रहा है. सईद क्लेम्स टू बी बीइंग फाइंड विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज. सईद क्लेम्स टू बी बीइंग फाइंड without any fault of his. इमरान का दावा है कि
اسے اس کی جائیداد سے محروم کیا جا رہا ہے. عمران claims to be being deprived of his property. عمران claims to be being deprived of his property. نوٹ deprive کے بعد preposition of آتی ہے. نمبر 6 claim to have verb کی تھرڈ فارم. نمبر 6 claim to have verb کی تھرڈ فارم. دعویٰ ہے کہ کر لیا ہے یا کر چکا ہے. دعویٰ ہے کہ کر لیا ہے یا کر چکا ہے. امجد کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی پڑھائی میں ترقی کر لی ہے. سبجیکٹ claim to have verb کی تھرڈ فارم اور آبجیکٹ. امجد claims to have progressed in his education. امجد claims to have progressed in his education. ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن کو شکست دے دی ہے. They claim to have defeated their enemy. They claim to have defeated their enemy. آفتاب کا دعویٰ ہے کہ یہ مچھلی اس نے پکڑی ہے. آفتاب claims to have caught this fish. آفتاب claims to have caught this fish. نمبر 7 claim to have been verb کی تھرڈ فارم پیسو وائس سینٹینس ہے. دعویٰ ہے کہ کیا گیا ہے. دعویٰ ہے کہ کیا گیا ہے. نعیم کا دعویٰ ہے کہ اسے سر عام بدنام کیا گیا ہے. سبجیکٹ claim اور ایس to have been verb کی تھرڈ فارم آبجیکٹ. نعیم claims to have been defamed in public. نعیم claims to have been defamed in public. اسلم کا دعویٰ ہے کہ اسے اس کی جائیداد سے محروم کر دیا گیا ہے. اسلم claims to have been deprived of his property. اسلم claims to have been deprived of his property. نمبر 8 claim to have noun اسم کے ساتھ. دعویٰ ہے کہ خود کے پاس ہے یا ہیں. دعویٰ ہے کہ خود کے پاس ہے یا ہیں. نعیم کا دعویٰ ہے کہ اس کے 2 مکان اور کئی کاریں ہیں. دعویٰ ہے کہ خود کے پاس ہے یا ہیں. نعیم کا دعویٰ ہے کہ اس کے 2 مکان اور کئی کاریں ہیں. سبجیکٹ claim اور ایس to have. ناؤن نعیم claims to have 2 houses and many cars. نعیم claims to have 2 houses and many cars. علی کا دعویٰ ہے کہ اس کے باپ کے پاس 2 کاریں ہیں. علی claims that his father has 2 cars. نوٹ جب فقرے میں 2 فاعل آ جائیں تو that کے بغیر فقرہ نہیں ہوتا. جب فقرے میں 2 فاعل آ جائیں تو that کے بغیر فقرہ نہیں ہوتا. عمران کا دعویٰ ہے کہ تمام طالب علموں کے پاس نئی کتابیں ہیں. عمران claims that all the students have new books. عمران claims that all the students have new books. ان غریب لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حکومت ان کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر رہی. These poor people claim that the government is not doing nothing for their welfare. These poor people claim that the government is not doing nothing for